बिल्डअप, एंड ये नहीं होने के कारण एनर्जी आई एम एक्सपेक्टिंग कि देयर कैन बी ईदर साइड अगेन अ स्विंग, और वो स्विंग कैप्चर करने के लिए ही एनर्जी ये लॉन्ग स्ट्रैंड स्ट्रेटेजी रेकमेंड कर रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय जय ठक्कर की तरफ से। लेकिन आइए कुछ एक और स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। डायग्नोस्टिक स्पेस, हॉस्पिटल स्पेस चला हुआ है। वागले सर, मेट्रोपोलिस कोई राय बन रही है अभी? नेहा जी, मेट्रोपोलिस में मेरा व्यू पॉजिटिव है। 2200 तक का मेरा अपसाइड टारगेट है 1 से 2 दिनों का, और अगर 2200 निकाल देता है फिर ये 2300 तक भी जा सकता है। करंट लेवल पे या हल्का सा नीचे 2150 2140 ये रेंज तक बाय करना है। 2100 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और 2300 का टारगेट की टाइम फ्रेम 3 से 4 दिन। ये है मेट्रोपोलिस आपके लिए इस वक्त। आइए इस बीच सुरक्षा, ये है वो आईपीओ जो आज लिस्टिंग की तैयारी है, और सुरक्षा 441 रुपए का इशू 1% नीचे लिस्ट होता दिख रहा है 437 पर। ये है आपके लिए आता है। बीएसई पर फिलहाल सुरक्षा का आईपीओ लिस्ट होने के प्री ओपनिंग सेशन से संकेत आ रहे हैं, और हल्की नुकसान के साथ लिस्टिंग होने के संकेत आपको दिखेंगे। 441 रुपए की इशू प्राइस, और इशू भरा था आपको तो पता ही है, करीबन 1.25 गुना, यानी कि मुश्किल से ही भरा। अब देखते हैं किस लेवल के आसपास हो लिस्टिंग के बाद आगे किस तरह का मूव दिखता है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा डायग्नोस्टिक आपके लिए बीएसई पर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है 1% के नुकसान के साथ। एनएससी पर फिलहाल प्राइस मुझे आती दिख नहीं रही है, जैसे आएगी हम आपको बताएंगे भी कि क्या कुछ हो सकता है आगे। एक बार स्टॉक तो मिल गया, देखते हैं कि लिस्टिंग किस लेवल पे होती दिख रही है। सुरक्षा का आईपीओ आज लिस्ट होने की तैयारी में आपके लिए। ओके, आइए इसी, हाँ आ गया, तो दोनों जगह 1% नीचे लिस्ट होता दिख रहा है। 437 पर बीएसई, 438 पर एनएससी। ये है आपके लिए आज की लिस्टिंग सुरक्षा लिमिटेड। आइए मॉनेटरी पॉलिसी पर विशेष कवरेज में आपका स्वागत है, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे शामिल। आइए पॉलिसी की बड़े कवरेज की तरफ बढ़ते हैं आगे। पॉलिसी के दौरान हमारे बाजार के सारे एक्सपर्ट्स तो आपके साथ रहेंगे। उनकी तरफ से बाजार के एक्शन के दौरान जो भी कॉल्स होगी वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिखेगी, वो हमें भेजते रहेंगे और हम फ्लैश करते दिखेंगे, चाहे गवर्नर साहब का स्पीच चल रहा हो, चाहे बाजार का बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख रहा हो। लेकिन बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने को है तैयार। पॉलिसी से बड़ी कवरेज में हमारे साथ स्टूडियो में 2 बेहद खास मेहमान आ चुके हैं। आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज साहब है हमारे साथ, ऑयस्टर कैपिटल के अतुल जोशी साहब है हमारे साथ, और हमारे साथ अजय बग्गा साहब जुड़ चुके हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ जना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के अजय कंवल साहब भी जुड़ चुके हैं, और गुरमीत चड्ढा साहब भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में है। इन सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात आप सभी को। बग्गा साहब, शुरुआत आपके साथ, बताएं सर, गवर्नर साहब आज कुछ करेंगे क्या? कहेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन करेंगे क्या? 7 चीजें पे अहमियत रखनी है अनिल जी। एक तो महात्मा गांधी का कोट जरूर आना चाहिए, वो आएगा जी। दूसरा है, उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, उसमें सब प्रोबेबिलिटीज है। रेट कट होता है नहीं होता है, 25 बेसिस पॉइंट, 7 में से 50 इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो मैं उनके साथ ही जाऊंगा कि रेट कट करना चाहिए, ग्रोथ की तरफ तवज्जो रखे। तो रेट कट, सीआरआर कट लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए। पॉलिसी स्टैंस न्यूट्रल रहेगा। उन्होंने कहा था विड्रॉल से न्यूट्रल में आएंगे फिर रेट कट करेंगे, तो न्यूट्रल की तरफ ही रहेगा। एकोमोडेटिव आने में टाइम लगेगा, टाइट है पॉलिसी। फिर जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा 30 से 40 बेसिस पॉइंट से घटाया जाएगा। तो 7.2 का जो अनुमान था 6.8 6.9 की तरफ वो रख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। इन्फ्लेशन का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ाएंगे, चाहे इन्फ्लेशन अगले साल कम आने वाली है, बट पिछले 2 महीने जो तेजी का आंकड़ा आया उसके कारण उनको बढ़ाना पड़ेगा। और एक अहमियत 7वां जो मैंने रखा, नॉर्मली मैं 5 चीजें ही बोलता हूँ और महात्मा गांधी एक एक्स्ट्रा रखते हैं साथ में कोट। और 7वीं चीज अनिल जी इस बारी की है कि क्या शक्तिकांत दास जी को एक फिर से एक्सटेंशन मिलता है। देखिए, जब पिछली बारी उनको एक्सटेंशन मिला था 2021 में,
एक महीना पहले सरकार ने ऐलान कर दिया था। अभी खबर नहीं आई और 10 दिसंबर को उनका कार्यकाल सिमटता है। अब ट्रेडिशनली 2 कार्यकाल से ज्यादा नहीं दिए जाते आरबीआई गवर्नर को। तो देखते हैं फिर आज फेयरवेल स्पीच है उनका या फिर 1 साल का एक्सटेंशन देके एक अंतरिम मेजर लिया जाए। तो ये 7 चीजें हैं अनिल जी आज देखने के लिए। पहली चीज प्रेडिक्टेबल है, 7वीं चीज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है। देखते हैं इन सब के बीच में कैसी रहेगी पॉलिसी। 2 खास बातें बग्गा साहब ने कहा, एक ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए, दूसरा जीडीपी के अनुमान घटने चाहिए। आइए अतुल जोशी साहब से भी करते हैं शुरुआत। सर आप बताएं क्या करेंगे गवर्नर साहब? देखिए बग्गा साहब ने सब कुछ कवर कर दिया है। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं कहूँगा 100% होना चाहिए। होना चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं बोलूँगा नहीं करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा था कि जब इंटरेस्ट रेट घट रहे थे तो उसकी जो साइकिल थी तो बॉटम हमने टच किया था मई 2020 में, जब 4% पे लाके हमने बॉटम पे इंटरेस्ट रेट घटाना बंद कर दिया। एग्जैक्टली 2 साल की एनिवर्सरी की गवर्नर साहब ने, और मई 2022 इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चालू किए। कहाँ पर स्टॉप किया? फरवरी 2023। एनिवर्सरी कब है? फरवरी 2025। ओहो। तो एक ये देखिए, ये तो एक बात एनिवर्सरी चले लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो वॉलिटिलिटी दुनिया में हमने देखी, उसमें 5 साल में सिर्फ 9 महीने ऐसे कि जहां पर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुए, ये दुनिया के किसी गवर्नर ने नहीं किया है। ये बहुत ही अहमियत वाली चीज है और आरबीआई गवर्नर के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि 5 साल में से 4 साल रेट स्टेबल रहे। तो मेरे ख्याल से फरवरी 2025। अभी दूसरा जो पहलू मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि आरबीआई जनरली 2 चीज की बात करते हैं, या तो इन्फ्लेशन है या तो जीडीपी है, लेकिन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की होती है बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंकर है, तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी उनका एक पार्ट होना चाहिए। अगर हम उसके ऊपर नजर करते हैं तो देखिए जीडीपी का आंकड़ा नीचे आ रहा है और मेरे ख्याल से जीडीपी ऊपर जाने के चांसेस अभी थोड़े से कम है। दूसरी चीज, अगर हम टैक्स कलेक्शंस देखें तो टैक्स कलेक्शन में कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम सब लास्ट ईयर के आंकड़े के करीब ही है, कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। तो मेरे ख्याल से एक स्लो डाउन, बहुत ही सिस्टमिक स्लो डाउन हमको दिख रहा है। तीसरी चीज, हम जितना भी बोरो करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी बोरो करिए, सारा का सारा पैसा जा रहा है इंटरेस्ट में। तो हम बोरो करते हैं इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो हमारी जो ग्रोथ के लिए कहां से इन्वेस्टमेंट आएगा? उसकी कोई गुंजाइश नहीं है अनलेस कि इंटरेस्ट रेट गिरे। तो मेरे ख्याल से जो जीडीपी का आंकड़ा पूरे साल के लिए आएगा वो 6.5% के भी नीचे आएगा। हम गवर्नमेंट की कैपेक्स देखें तो लास्ट ईयर से भी हमने कम किया है, 50,000 करोड़ लास्ट ईयर से हमने कम किया है कैपेक्स। तो कोई जीडीपी मेरे ख्याल से बहुत वीक आने वाली है। तो आरबीआई के लिए काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिस्कल के तरीके से कि रेट घटाए। बिल्कुल ठीक बात है, घटाना चाहिए लेकिन घटाएंगे नहीं, ये अतुल जोशी साहब का मानना है। अजय कंवल साहब से भी लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर को क्या है उम्मीद है इस पॉलिसी से? सर क्या कुछ हो सकता है बैंक्स के लिए? तो अनिल जी, मुझे लगता है कि देखिए रेट हम लोग शायद होल्ड करें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रुपी थोड़ा वीक है। हाँ, पर जीडीपी थोड़ा वीक आया है, इसलिए कुछ तो करना है। सो लिक्विडिटी में हेल्प आएगी, या तो ओएमओ के थ्रू आएगी या सीआरआर कट के थ्रू आएगी। आई थिंक सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी, थोड़े रेट सॉफ्ट हो जाएंगे लेंडिंग के। I think that will be the attempt that will serve the purpose, I feel, of helping the GDP a bit. जो structural issues are GDP growth में तो separately address होंगे, but I do feel कि given where rupee is, we may probably see the liquidity attempt first, and that may be the right answer. Also, inflation नीचे नहीं आया तो rate घटा के there is no point taking that risk also. So, on balance, I feel there will be a attempt towards increasing liquidity, and rates may follow if required. आप सर आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि सीआरआर कट आज आ रहा है? पता नहीं मुझे, ओएमओ होगा, सीआरआर होगा, दोनों कॉम्बिनेशन होगा। वन ऑफ द थिंग, बिकॉज द आइडिया really is to infuse more liquidity. I feel OMO is a better method, easier method, and at this point we don't have to over respond.
So I think OMO may be the better answer. बिल्कुल ठीक बात है। तो पहली बार हमारे पोल में 60% एक्सपर्ट्स ने माना है, और ये पोल किया हमने मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जिसमें ज़्यादातर डेट फंड मैनेजर हैं, इकोनॉमिस्ट दिग्गज लोग, और साथ ही साथ बैंकर्स। 60% लोग, ये तीनों का जो ग्रुप है, वो मान रहे हैं कि CRR कट में आने की तैयारी या फिर किसी न किसी तरह से लिक्विडिटी बढ़ने की तैयारी है। आइए, ऐसे में बाजार का क्या रुझान रहेगा? पॉलिसी से पहले तो ठीक है, पॉलिसी के बाद बाजार को किस चीज़ का है इंतज़ार? गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ हैं, जो कि यंग हैं, सरदार हैं, स्क्वॉश खेलते हैं, ऐसा हमें बग्गा साहब ने सिखाया है। बताएं सर, बाजार को कैसे खेलना है पॉलिसी के बाद? थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। मुझे लगता है अनिल जी, मैं सहमत हूँ जो अजय सर ने बोला कि करने की ज़रूरत है, शायद करें ना, पर लिक्विडिटी टूल्स को शायद पहले यूज़ करें। OMO और CRR के थ्रू ओवरनाइट जो बोरिंग कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, जिनका बैंक्स पे खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट एक कंसर्न रहा है। दूसरा, RBI का ओवरऑल स्टांस क्या है? मुझे लगता है मार्केट जो है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो वो देखना चाहेगा कि वो कितना एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ग्रोथ स्लो डाउन कितना है। दूसरा, RBI ने एक बड़ा कुछ बहुत इंटरवेंशन किया है माइक्रो फाइनेंस को लेके, गोल्ड बेस्ड लोन्स को लेके, IPO फंडिंग को लेके, NBFCs के कुछ पोर्टफोलियोज को लेके। वो मुझे लगता है कमेंट्री में बाजार सुनना चाहेगा कि क्रेडिट स्ट्रेस कितना है, क्योंकि टाइट इंटरेस्ट रेट स्लो डाउन क्रेडिट स्ट्रेस के लिए अच्छा नहीं है, एसेट क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो इस पे भी मुझे लगता है एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, और ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि करेंसी वीक है। अगर टैरिफ्स US एडमिनिस्ट्रेशन लगाती है तो वो भी इन्फ्लेशनरी हो सकता है। तो ओवरऑल बैलेंस बनाने की जरूरत है। मेरी बैंक्स पे खास निगाह रहेगी। कॉस्ट ऑफ फंड्स का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, जिसे हम रेट सेंसिटिव सेक्टर्स बोलते हैं, उसको मैं देखना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे ने 2023-24 के ये बोला था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क में थोड़े बदलाव की ज़रूरत है, फूड इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करके करना चाहिए। तो ये वो कितना RBI उसको एक्नॉलेज करता है, इम्प्लीमेंट करता है, ये देखना रहेगा। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है RBI रिस्पॉन्ड करेगा, थोड़ा बहुत टूल से करेगा, OMO करता है, CRR करता है, थोड़ा स्टांस और फोरकास्ट से करेगा, क्योंकि अभी तक RBI मेरे हिसाब से बेस्ट सेंट्रल बैंक रहा है कोविड के बाद, और मुझे लगता है यहाँ भी वो बिहाइंड द कर्व नहीं रहेगा। ओके, RBI बिहाइंड द कर्व नहीं, अहेड ऑफ कर्व रहता है, और उम्मीद इस पॉलिसी में भी है। आइए, डेट मार्केट पर किस तरह का एक्शन अब तक हुआ है पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद क्या कुछ हो सकता है? हमारे जाने माने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीत साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में। फिरोज सर, बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से पॉलिसी में? मेरे हिसाब से पॉलिसी में अजय जी ने जैसे कहा, रेपो रेट डेफिनेटली। वो अजय जी है हमारे पास। ओके, बग्गा जी। बिल्कुल करेक्ट जी, हर चीज में वैरायटी है अनिल सर के पास। सो एक तो रेपो रेट घटाने की अच्छी खासी संभावना है। ऑफ कोर्स GDP नंबर्स आर अ गुड प्रॉक्सी टू दैट। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं डेरिवेटिव सेगमेंट काफी ट्रैक करता हूं, बिकॉज डेरिवेटिव ट्रेजरी संभालनी पड़ती है। जी। तो इसमें आप देखें, जो ऑप्शंस के जो स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस इज द वॉलेटिलिटी, जो दूर के ऑप्शंस जो होते हैं उसकी स्क्यूनेस इतनी ज्यादा मैंने नहीं देखी कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी में। 90 मॉनेटरी पॉलिसीज में मैं टर्मिनल पे बैठा हूं 2009 से 90 हुई हैं, उसमें से 50 में कुछ चेंज नहीं हुई। अच्छा, 22 में चेंज हुई ऊपर की तरफ, और 18 में रिड्यूस किया गया। ठीक है, ये है पूरे 90 पॉलिसियों की। 22 में से मतलब 40 में चेंज हुई, 40 में चेंज हुई, 50 में। तो इस बार चेंज की उम्मीद बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज 24,000 का पुट नेक्स्ट थर्सडे का 38 रुपए का चल रहा है, जो 720 पॉइंट्स दूर है निफ्टी की। करेक्ट, 4 डेज है उसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी अगर मैं कंप्यूट करूं, दिस इज द हाईएस्ट यू वुड सी फॉर अ 4 डे। और आप देखिए, ऑन द हायर साइड जनरली स्माइल कर्व होता है वॉलेटिलिटी में। 26,500 का मतलब 25,500 का ऑप्शन आइडियली आज अगर नॉर्मल होता तो 4 रुपए का होना चाहिए था, 3 रुपए का होना चाहिए था। अब 18 रुपए का है एज वी स्पीक। सो इतनी ज्यादा स्क्यूनेस, मतलब वॉलेटिलिटी की आप उम्मीद करके चले। और ऑप्शंस मार्केट काफी अच्छी प्रेडिक्टर है। जैसे कल एक बहुत ड्रामेटिक डे था, इतना ड्रामेटिक डे था कि मैंने 10 साल में टर्मिनल पे बैठ के ऐसा कोई थर्सडे नहीं देखा कि स्ट्रैडल 300 रुपए का चल रहा हो 1:30 बजे,
मतलब 1.25% का एक्सपायरी के दिन 1.5 घंटे की एवरेजेस चालू होने वाली हैं। इतना ज्यादा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, और मार्केट ने वो वॉलेटिलिटी दिखाई भी और 500 पॉइंट की स्विंग दी। डेरिवेटिव मार्केट एक कंसोलिडेटेड ओपिनियन है भारत देश का। हम जब सर्वे करते हैं तो एक 20 लोगों की सर्वे कर सकते हैं, बट डेरिवेटिव मार्केट इज अ कंसोलिडेटेड बैरोमीटर ऑफ व्हाट इंडिया इज थिंकिंग एंड ऑल पार्टिसिपेट्स आर थिंकिंग। तो मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी की उम्मीद करके चलनी चाहिए। शार्प मूव्स होंगे। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, इंड्यूस वॉलेटिलिटी एक बड़ा, अनिल सर आपके शायद ये आए, काफी सारे एल्गोस क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक निफ्टी ही एक डिराइव्ड इंस्ट्रूमेंट है, वो वॉलेटिलिटी को इन्फ्यूज कर रहे हैं। टॉप 4 स्टॉक में बहुत ज्यादा खरीदी या बेची कर रहे हैं इन मिली सेकेंड्स, उसकी वजह से स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं। और मैं तो एज अ डेरिवेटिव स्ट्रेटेजिस्ट वो स्टॉप लॉस दूसरों की ट्रिगर होगी उसके लिए मार्जिन लेके बैठने लग गए लोग, दूसरे लोग, राइट। एंड कल 5 मिनट के लिए, करेक्ट। So a point I'm trying to make is volatility is going to be high, repo rate has to be reduced, ये उम्मीद है मार्केट की। और तीसरी, डेट मार्केट में लॉन्ग एंड ऑफ द यील्ड कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्प्रेड है रेपो रेट और 10 ईयर जीसेक का सिर्फ 27 पैसे का है, और लास्ट 15 साल की एवरेज है 1.7% की स्प्रेड। भले ही रेपो रेट घट जाए, 10 ईयर जीसेक नहीं घटेगा, डेट फंडों में पैसे नहीं बनने वाले, क्योंकि नुकसान नहीं हुआ है जब ऊपर गए थे। मॉर्निंग एंड नमस्कार। Every 2 months I have been presenting the monetary policy statement on behalf of the Monetary Policy Committee and the Reserve Bank of India before you. In fact, a detailed, elaborate statement presenting before all of you is a practice which we started during the period of the COVID, when there were lockdowns and restrictions. We considered that this was the most appropriate way of communicating with every stakeholder in the economy. Monetary policy is important because it affects the life of people. It affects each and every segment of the economy, howsoever small or big. It affects the vegetable vendors. It affects the big corporates. It affects the middle class. I think it also affects the farmers, the industry, the business. So it has wide-ranging impact on the economy, and that is why I'm sure that is the reason why most of you are listening to the governor's statement. Our effort is to follow the flexible inflation targeting framework as provided in the Reserve Bank of India Act. The Act provides that the Reserve Bank, that is the Monetary Policy Committee, to price stability. In fact, it is a mandate. The mandate given to the Reserve Bank of India is to maintain price stability while supporting or keeping in mind the objective of growth. Price stability is important for the people because it affects their purchasing power. It is important for stability of businesses. It is important for exporters and importers. It is important for every segment of the economy. So price stability is important. At the same time, growth is also very important. As an economy, India has been growing in the last 3 years at more than 8%. Growth, that is the GDP growth, the growth of the gross domestic product, is also very important. And as provided in the law, it is always our effort at the Reserve Bank of India, it is also the effort of the Monetary Policy Committee to follow the provision of the law as embedded, as provided for in the Reserve Bank of India in letter and spirit. So with these opening remarks, I present before you the monetary policy statement of today. And this is how it goes. As we stand at the threshold of 2025, let me reflect upon the eventful journey of 2024. In line with the trend in the last few years, central banks were once again put to the ultimate test to stabilize their economies against continuous, colossal, and complex shocks. Central banks are constantly adapting to the new global economic and financial landscape created by geopolitical conflicts, geoeconomic fragmentation, financial market volatility, and continuing uncertainties, all of which are testing the resilience of the global economy. The last mile of disinflation is turning out to be prolonged and arduous.
both for the advanced economies as the emerging market economies, that is the EMEs. Maintaining macroeconomic and financial stability and building buffers continue to be the lodestar, especially for the emerging market economies. In India, notwithstanding the recent aberration in growth and inflation trajectories, the economy continues its journey on a sustained and balanced path towards progress. Amidst the reshaping of the global economy, India is well positioned to benefit from the emerging trends as it forges ahead on a transformative journey. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee, which met on 4th, 5th, and today 6th December. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, because monetary policy is forward-looking, so we have to always look at the outlook, the Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided unanimously to continue with the neutral stance and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for this. The MPC took note of the recent slowdown in the growth momentum, which translates into a downward revision in the growth forecast for the current year. Going forward into the second half of this year and the next year, the MPC assessed the growth outlook to be resilient, but warranting close monitoring. Inflation, on the other hand, surged above the upper tolerance band of 6% in October, driven by a sharp uptick in food inflation. Food inflation pressures are likely to linger in Q3 of the current financial year and start easing only from the Q4 of the current financial year, that is from January to March, driven by a sharp uptick in food inflation. Food inflation pressures are likely to linger in Q3 of the current financial year and start easing only from the Q4 of the current financial year, that is from January to March. And we expect that this is the trend, and it will be backed by seasonal correction in vegetables prices, Kharif harvest arrivals, likely good Rabi output, and adequate cereal buffer stocks. High inflation reduces the disposable income in the hands of consumers and dents private consumption, which negatively impacts the real GDP growth. The increasing incidence of adverse weather events, heightened geopolitical uncertainties, and financial market volatility pose upside risks to inflation. The MPC believes that only with durable price stability can strong foundations be secured for high growth. The MPC remains committed to restoring the inflation growth balance. I repeat, the MPC remains committed to restoring the inflation growth balance in the overall interest of the economy. Accordingly, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting, and also to continue with the neutral stance of monetary policy as it provides flexibility to monitor and assess the outlook on inflation and growth, and then go on to act appropriately. I would now like to provide an assessment of growth and inflation, and I would like to begin with the global growth scenario. The global economy has shown unusual resilience in 2024, despite several headwinds. Inflation is gradually moving towards the target
from its multi-decadal highs, prompting several central banks to embark on policy pivots. Global trade remains resilient, with increasing volumes confined within geographical blocks. Since the last MPC meeting, financial markets have remained edgy amidst rising US dollar and hardening bond yields, resulting in large capital outflows from emerging markets and also in volatility in equity markets. Going forward, the outlook is clouded by rising tendencies of protectionism. I'm talking about the global economy. Going forward, the outlook is clouded by rising tendencies of protectionism, which have the potential to undermine global growth and also push inflation higher. Let me now turn to the domestic growth situation. Growth in real GDP in the second quarter of this year at 5.4% turned out to be much lower than anticipated. This decline in growth was caused mainly by a substantial deceleration in the industrial growth from 7.4% in the first quarter to 2.1% in the second quarter due to subdued performance of manufacturing companies, contraction in mining activity, and lower electricity demand. The weaknesses in the manufacturing sector, however, was not broad-based, but was limited to specific sectors such as petroleum products, iron and steel, and cement. Going forward, high-frequency indicators available so far suggest that the slowdown in domestic economic activity bottomed out in the second quarter of this year, and it has since recovered, aided by strong festive demand and pickup in rural activities. Agricultural growth is supported by healthy kharif crop production, higher reservoir levels, and better rabi sowing. Industrial activity is expected to normalize and recover from the lows of the previous quarter. The end of the monsoon season and the expected pickup in government capital expenditure may also provide some impetus to cement as well as iron and steel sectors. Mining and electricity are also expected to normalize post the monsoon-related disruptions. I specifically commented on these sectors, that is on manufacturing, on electricity, and also on mining and iron and steel, as well as on cement, because these were the sectors, particularly in manufacturing, mining, and electricity demand, which were the principal factors which pulled down the GDP number in second quarter. So that's why I have focused how these three sectors are expected to behave in the current quarter as well as in the next quarter. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing at 56.5 for November, remained elevated. The supply chain pressures eased in October-November and fell below the historical average. The services sector continues to grow at a strong pace. PMI services remained steady at 58.4 in November, indicating continued expansion. On the demand side, rural demand is trending upwards, while urban demand shows some moderation on a high base. Government consumption is improving. Investment activity is also expected to improve. On the external front, merchandise exports expanded by 17.2% in October, while services exports continued to post upbeat growth at 22.3% in October. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 2024-25, that is the current year, is now projected at 6.6%, with Q3 at 6.8% and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for the first quarter of 25-26 is projected at 6.9%,
and the second quarter of 25-26 at 7.3%. The risks are evenly balanced. I would now like to focus on inflation. Inflation increased sharply in September and October 2024, led by an unanticipated increase in food prices. Core inflation, though at subdued levels, also registered a pickup in October. Fuel group remained in deflation for the 14th consecutive month in October. In the near term, despite some softening, lingering food price pressures are likely to keep headline inflation elevated in the third quarter, that is, in the quarter October to December. Going ahead, a good Rabi season would be critical to the softening of food inflation pressures. Early indications point to adequate soil moisture content and reservoir levels, conducive for Rabi sowing. The estimates of record Kharif production should bring relief to elevated prices of rice and tur dal in particular. Vegetable prices are also expected to see a seasonal winter correction. On the upside, the evolving trajectory of domestic edible oil prices following the hike in import duties and rise in their global prices need to be monitored closely. Manufacturing and services firms surveyed by the Reserve Bank point to firming up of input costs and selling prices in the fourth quarter of the current financial year, that is in the quarter January to March. Taking all these factors into consideration, CPI inflation for the current financial year, that is 24-25, is projected at 4.8%, with Q3 at 5.7%, Q4 at 4.5%. Going into the next financial year, CPI inflation for the first quarter of 25-26 is projected at 4.6% and Q2 at 4%. The risks are evenly balanced. Now, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? I have described the growth conditions. I have described the inflation conditions. Now, what do all these factors mean for monetary policy? And that is what I would like to now highlight. The near-term inflation and growth outcomes in India have turned somewhat adverse since the last monetary policy in October. The medium-term prognosis on inflation suggests further alignment with the target, while growth is expected to pick up its momentum. Persistent high inflation reduces the purchasing power of consumers and adversely affects both consumption and investment demand. The overall implication of these factors for growth is negative. Therefore, price stability is essential for sustained growth. On the other hand, a growth slowdown, if it lingers beyond a point, may need policy support. The Reserve Bank's anti-inflationary monetary policy stance has been a crucial factor in bringing about a significant disinflation. Going forward, as food price shocks wane, headline inflation is expected to ease and realign with the target as per our projections, which I just read out. At present, it is necessary to draw on the flexibility provided by the neutral stance of monetary policy to wait for and monitor the incoming data for confirmation of the decline in inflation. The gains achieved so far in the broad direction of disinflation, notwithstanding the recent upticks, need to be preserved. At the same time, the growth trajectory and the evolving outlook also need to be monitored very closely. At this critical juncture, prudence and practicality demand that we remain careful and sensitive to the dynamically evolving situation with all its complexities and ramifications.
A status quo in monetary policy in this meeting of the MPC has thus become appropriate and essential. I would now like to turn to liquidity and financial market conditions. System liquidity as represented by the net position under the LAF, that is net LAF, that is net liquidity adjustment facility, it continued to remain in surplus during October and November on account of higher government spending, despite a significant increase in currency in circulation during the festive season and capital flows. Of course, towards the end of November, for a few days, the liquidity became tight, but overall, I think there was adequate liquidity both in October and November, and it remained in surplus. Given these conditions, the Reserve Bank mainly conducted variable rate reverse repo operations, that is VRRR operations, to absorb surplus liquidity. To alleviate temporary liquidity tightness because of large GST outflows, however, fine-tuning variable rate repo operations, that is VRR operations, were conducted intermittently during October and November. The two-way liquidity operations of the Reserve Bank ensured close alignment of the interbank overnight rate with the policy repo rate. Transmission to the credit market has been satisfactory. As you would have noticed, as in the previous monetary policy statements, a lot of data is given in the footnotes. So those of you who are interested may have a look at the footnotes, because the data in the footnotes justify and back up whatever I am saying as a part of my statement. Now, even as liquidity in the banking system remains adequate, system liquidity may tighten in the coming months due to tax outflows, increase in currency in circulation, and volatility in capital flows. To ease the potential liquidity stress, it has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is, to reduce the CRR of all banks to 4% of net demand and time liabilities, that is NDTL. And this will be done in two equal tranches of 25 basis points each, with effect from the fortnight beginning December 14th and December 28th. This will restore the CRR to 4% of NDTL, which was in fact the prevailing rate before commencement of the policy tightening cycle in April 2022. The reduction in CRR is consistent with the neutral policy stance and would increase primary liquidity of about rupees 1.16 lakh crore, that is 1,16,000 crore, to the banking system. Going forward, the Reserve Bank will continue to be nimble and proactive in its liquidity management operations to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner and the productive requirements of the economy are met. During 2024-25, that is from the period April to November, the Indian rupee depreciated by 1.3%, largely due to pressure from strengthening US dollar and selling pressure by foreign portfolio investors, especially in October and November. Nevertheless, both the depreciation of the Indian rupee and its volatility was less compared to its EME peers. And this reflects India's strong macroeconomic fundamentals and improvement in the external sector outlook. The Reserve Bank's exchange rate policy has remained consistent over the years, and it is market determined. Its central tenet is to maintain orderliness and stability without compromising market efficiency. Foreign exchange reserves are deployed judiciously to mitigate undue volatility, maintain market confidence, anchor expectations, and preserve overall financial stability. These interventions focus on smoothing excessive and disruptive volatility rather than targeting any specific exchange rate level or band. At the same time, our effort to deepen and modernize the foreign exchange market have also yielded significant results
in terms of, first, widening access and participation, and second, ensuring efficiency and ensuring efficient price discovery. Our overall approach ensures that forex reserves act as shock absorbers, safeguarding the economy from external spillovers, while supporting competitive and orderly market conditions. The flexible or market-determined exchange rate regime is not merely a tool for managing external shocks. It is an important element of our approach to macroeconomic and financial stability. By combining market discipline with prudent intervention, we have created a system that supports stability, resilience, and growth. Let me now focus on financial stability. The financial parameters of banks and NBFCs continue to be strong. The incoming data suggest that the gap between growth of credit and deposits of scheduled commercial banks has narrowed, with deposits keeping pace with loan growth. In fact, on the financial sector, I can say with confidence that I think the health of the financial sector today is perhaps at one of its best in a long time. The Reserve Bank's supervision of the financial sector and its entities continues to be vigilant and proactive. Incipient signs of stress, if any, either at the systemic or entity levels, are monitored closely and proactive action is initiated. The effort is always to resolve the issues non-disruptively. Continuous engagement is held over several months, sometimes even exceeding 1 year, with the regulated entities. Only in extreme cases where sufficient corrective action is not visible, the Reserve Bank resorts to imposition of business restrictions as a last resort in the interest of consumers and financial stability. In fact, there are a large number of entities where the corrective action is taken and where we simply do not take any action because the response by the regulated entities is found to be, very proactive and, very responsive. And so in many cases, without imposing any restrictions on their business or other kinds of activities, the problem gets resolved. Obviously, the list is not known outside. That list is much longer. And the total number of entities, I'm not being defensive about it or in any way. Why I'm emphasizing on this is that this is something which we have to do in the interest of stability of the system as well as the stability and health of the individual entities. So only in extreme cases where sufficient corrective action is not visible, the Reserve Bank resorts to imposition of business restrictions as a last resort in the interest of consumers and financial stability. To address the issues of unclaimed deposits, inoperative accounts, and frozen accounts due to pendency of KYC updation, banks have been advised very recently, once again, to take necessary steps urgently to bring down the number of such accounts and make the process hassle-free. Further, banks have been advised to segregate the accounts of beneficiaries of various central and state government schemes through direct benefit transfer, that is DBT, and facilitate uninterrupted credit of the DBT amounts into their accounts and also utilization of the DBT amounts by the account holders. And we have advised the banks to do it without inconveniencing such vulnerable segments of customers, because the DBT beneficiaries are usually, and they are the vulnerable sections of the society. So being fully mindful of that, we have emphasized that there should be a kind of a seamless and smooth flow of DBT amounts into the bank accounts of such individuals in a situation so that it facilitates the individuals to withdraw the money to meet their various requirements. Progress made by individual banks in this regard will be monitored by the Reserve Bank. I would now like to turn to the external sector.
The statement today is a bit, because we have too many announcements, so I request your continued patience. External sector. India's merchandise exports expanded at a 28-month high pace in October. Merchandise imports also increased for the 7th consecutive month. Services exports sustained buoyancy and posted double-digit growth in second quarter as well as in October 2024. The robust services exports, together with strong remittance receipts, are expected to keep the current account deficit within sustainable levels during 24-25. On the external financing side, gross FDI to India increased at a robust pace. I'm talking about gross. The gross FDI into India increased at a robust pace during the first half of the year. Net FDI, however, moderated during this period due to higher repatriations and rising outward FDI. Foreign portfolio investment, that is FPI inflows to EMEs have generally declined in October. Net FPI inflows to India stands at $9.3 billion so far in the current year, that is from April to December 4th. And this was supported mainly by inflows in the debt segment. External commercial borrowings and non-resident deposits, on the other hand, witnessed higher net inflows compared to the last year. India's external sector remains resilient, as reflected in various key indicators where India has been consistently performing well. And the key indicators and the data they are given in the footnotes. In order to attract more capital flows, in order to attract more capital inflows, it has been decided to increase the interest rate ceilings on FCNRB deposits. Accordingly, effective from today, banks are permitted to raise FCNRB deposits of 1 year to less than 3 years maturity at rates not exceeding the ceiling of overnight alternate reference rate, that is overnight ARR, plus 400 basis points as against 200 basis points at present. So in addition to the overnight ARR, currently the banks are allowed a spread of 250 basis points that is being increased to 400 basis points. Similarly, for deposits of 3 to 5 years maturity, the ceiling has been increased to overnight ARR plus 500 basis points as against 300 basis points at present. This relaxation will be available till 31st March 2025. I shall now announce certain additional measures. I again request your patience because the additional measures, they are very important. The first one relates to the FX retail platform, and this is how it is. The FX retail platform, which was launched in 2019, is now proposed to be linked with the Bharat Connect platform of the NPCI. This would enable users to transact on the FX retail platform through mobile apps of banks and non-bank payment system providers. This will expand the reach of FX retail platform, enhance user experience, and promote fairness and transparency in pricing with adequate safeguards. The second announcement relates to introduction of secured overnight rupee rate, SORR, a benchmark based on secured money markets. With a view to further develop the interest rate derivative market in India and improve the credibility of interest rate benchmarks, the Reserve Bank proposes to introduce a new benchmark, namely secured overnight rupee rate, that is SORR, which is based on all secured money market transactions, that is overnight market repo as well as TREPS. The third announcement relates to Connect to Regulate, an initiative for open regulation. As part of Reserve Bank's consultative approach in framing regulations, a new program, namely Connect to Regulate, will be launched under the ongoing RBI at 90 commemorative events. A dedicated section in the Reserve Bank's website
will be made available for stakeholders to share their ideas and inputs on specific topics. So we will give out a specific topic on that. We are not going to upload a discussion paper or anything, but we will just mention the topic, and we would like all stakeholders to give their opinion, suggestion, and thoughts to the RBI. So it is that makes our process of consultation much wider and much more flexible, which has been our approach over the last few years. Next announcement is introduction of podcast facility as an additional medium of communication. Over the years, the Reserve Bank has expanded its communication toolkit and techniques to enhance transparency and better connect with the people. In continuance of this endeavor, the Reserve Bank proposes to add podcasts to its communication toolkit for wider dissemination of information. And the next announcement, which I am going to read out, is very important for the agricultural sector, especially for small farmers. And that relates to collateral-free agricultural loan enhancement of limit. The limit for collateral agricultural loans was last revised in 2019. Taking into account the rise in agricultural input costs and overall inflation, it has been decided to increase the limit for collateral-free agriculture loans from rupees 1.6 lakh crore per borrower to rupees 2 lakh per borrower. This will further enhance credit availability for small and marginal farmers. The next announcement relates to UPI. I am sorry. A credit line on UPI was launched in September 2023 and was made available through scheduled commercial banks. It has now been decided to permit small finance banks also to extend pre-sanctioned credit lines through the UPI. This will further deepen financial inclusion and enhance formal credit, particularly for the new-to-credit customers. Next announcement relates to artificial intelligence, its deployment in a very prudent manner. The financial sector landscape is witnessing rapid transformation enabled by technologies such as AI, tokenization, cloud computing, etc. In order to harness the benefits from these technologies while addressing the associated risks such as algorithmic bias, explainability, data privacy, etc., a committee comprising of experts from diverse fields will be set up to recommend a framework for responsible and ethical enablement of AI. I repeat, a framework for responsible and ethical enablement of AI, and the acronym is FREE AI in the financial sector. The last announcement relates to dealing with mule accounts. As part of the Reserve Bank's continued efforts to prevent and mitigate digital frauds, an innovative AI/ML-based model, namely the MuleHunter.ai, has been developed by the Reserve Bank Innovation Hub at Bengaluru. This will help the banks to deal with the issue of mule accounts expeditiously and reduce digital frauds. Let me now conclude. The world today is characterized by intricate complexities and profound uncertainties. As a central bank, our job is that of an anchor of stability and confidence, which would ensure that the economy achieves sustained high growth. Since the last policy, that is, since the October policy, inflation has been on the upside, while there has been a moderation in growth. Accordingly, the MPC has adopted a prudent and cautious approach in this meeting to wait for better visibility on the growth and inflation outlook. At such a critical juncture, prudence, practicality, and timing, I repeat, at such a critical juncture, prudence, practicality, and timing of decisions become even more critical. Our endeavor in the Reserve Bank has always been
to implement timely and carefully calibrated measures to derive the maximum impact. This will continue to be the guiding principle for all future actions also. As Mahatma Gandhi had said, and I quote, "There is nothing that cannot be attained by patience and equanimity." In the last few years, we have traversed one of the most difficult periods in the history of the Indian economy and perhaps in the global economy. And this has been a very difficult period in the economic history, in the history of Indian economy and the global economy, just as I pointed out. It was a period of relentless turbulence and jolts. As a country, we can derive satisfaction that the Indian economy has not just navigated this period of trials successfully, but has emerged stronger. As we strive together towards making India a developed economy, I recall what I had said in my statement of February 8, 2023, wherein I had quoted Netaji Subhash Chandra Bose, "Never lose your faith in the destiny of India." Thank you. Namaskar. आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से एक बहुत ही मुश्किल समय में बेहद संतुलित पॉलिसी, जहां बढ़ती हुई महंगाई, घटती हुई ग्रोथ और सूखती हुई लिक्विडिटी के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश में कामयाब हुए हैं गवर्नर। जल्दी से बता दूं आपको पहले मॉनेटरी पॉलिसी की बड़ी बातें और उसके बाद हम इसका करेंगे पूरा विश्लेषण। एडिटर स्टेक के तौर पर आरबीआई ने सीआरआर में की है कटौती, 4.5% से घटाकर 4%। 4 साल बाद हुई है कटौती और ब्याज दरें बिना बदलाव के रखी है 6.5% पर स्थिर। एमपीसी के 6 में से 4 सदस्यों ने कहा है ब्याज दरें रखी जाए स्थिर। इसके अलावा अक्टूबर की महंगाई थोड़ी सी रेंज से बाहर हुई है और चौथी तिमाही में महंगाई कम होने की उम्मीद, और इसीलिए जीडीपी में भी अगर आप देखें तो अनुमान में की गई है कटौती। तीसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ घटाकर अब 6.8% की गई है और पूरे साल भर के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% किया है आरबीआई ने। करीबन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 60 बेसिस पॉइंट कटौती होती हुई दिख रही है जीडीपी की ग्रोथ में पूरे साल भर के लिए। महंगाई का अनुमान भी घटाया है और अब तीसरी तिमाही में महंगाई का माफ कीजिएगा बढ़ाया 4.8% से बढ़ाकर 5.7% और महंगाई पूरे साल भर के लिए यहाँ पर अनुमान 4.5% से 4.8% किया गया है। और कुल मिलाकर सीआरआर की कटौती सिस्टम में लाएगी 1,16,000 करोड़ रुपए और संतुलित पॉलिसी महंगाई के साथ ग्रोथ और लिक्विडिटी पर भी है फोकस आरबीआई का। ये सारे के सारे टॉप 10 आज आपके आरबीआई की पॉलिसी में आते हुए दिख रहे हैं। आइए मैं बता दूं आपको कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और क्या कुछ आरबीआई गवर्नर कहना जा रहे हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात यह है कि आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी, ग्रोथ और महंगाई, इन तीनों का बैलेंस बनाने की गई है कोशिश। सीआरआर का कट 0.5% होना बेहद पॉजिटिव है क्योंकि लोग बटे हुए थे सीआरआर कट होगा या नहीं, लेकिन एक साथ 0.5% सीआरआर कट करके सिस्टम में भरपूर लिक्विडिटी देने की कोशिश की है आरबीआई गवर्नर ने और मार्च 2020 के बाद पहला सीआरआर कट आता हुआ दिखा है और इससे सिस्टम में करीबन 1,16,000 करोड़ की लिक्विडिटी आएगी। उम्मीद के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ घटाई गई है, जाहिर सी बात है 6.6% पर आई है और उम्मीद के मुताबिक ही महंगाई के अनुमान में हुई है बढ़ोतरी। लेकिन दो बड़ी चीजें जो बाजार के लिहाज से आपको ध्यान में रखनी है। पॉलिसी बाजार के लिए पॉजिटिव है, इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए और ऐसे में अब आपको बाजार के लिहाज से दो चीजों पर करना है फोकस, ऊपर और नीचे के लेवल्स क्या है। सबसे पहले अगर आप तेजी की पोजीशन में निफ्टी पर 24,575 ये आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे बेसिस पे, क्लोजिंग पे तो दूर है 24,450 और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे 53,000 का स्टॉप लॉस है। अगर आज 24,750 के ऊपर निकल कर टिकता है और बंद होने के संकेत देता है तो बड़ा ब्रेकआउट आपको निफ्टी में मिलेगा और 53,900 के ऊपर बैंक निफ्टी पर ब्रेकआउट मिलेगा। यह है पॉलिसी का पूरा सारांश और धीमे धीमे पॉलिसी के बाद बाजार मजबूती बढ़ाता हुआ डबल सेंचुरी मारने के मूड में है निफ्टी बैंक और निफ्टी हल्के हरे निशान में। आइए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार और सारे एक्सपर्ट से करते हैं बात। सबसे पहले शुरुआत सीआरआर कट को लेकर बग्गा साहब का पूरा अनुमान था और बग्गा साहब ने कहा भी कि आज सीआरआर कट होना चाहिए। बग्गा साहब हो चुका, बधाई स्वीकार करें। प्रसन्न है आप और वो भी 0.5% छप्पर फाड़ के? जी बिल्कुल अनिल जी, 6/7 है। एक उम्मीद थी जो मेरे दोस्त अतुल ने भी बोला था कि रेट कट होना चाहिए बट करेंगे नहीं। मैंने बोल दिया कि रेट कट होगा, वो उस पे गलत हुआ। महात्मा गांधी का कोट भी आ गया अनिल जी, न्यूट्रल पॉलिसी रही, सीआरआर कट आ गया
और साथ में जीडीपी कम किया, इन्फ्लेशन बढ़ाई। अब जीडीपी जो ये कम हुआ है 60 बेसिस पॉइंट, ये थोड़ा तगड़ा कट है। और इन्फ्लेशन तो ठीक है, उम्मीद थी कि करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे। 6/7 हम ठीक थे अनिल जी, बट ओवरऑल मैं कहूँगा मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। संतुलित पॉलिसी जरूर है, कंजर्वेटिव है और इन्फ्लेशन की तरफ ज्यादा फोकस है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें। और हम 4% का हमारा टारगेट है, हमें अलाउड है +-2, तो 6% हम टॉलरेट कर लेते हैं, बट 4 की तरफ आना है। हम डेवलप्ड नेशन नहीं है कि हम 4 पे बैठे रहें। और क्या है, ये लैग से आता है। जब आप रेट कट करेंगे भी, अब अकोमोडेटिव जब होंगे, उसके 6 से 12 महीने लगेंगे इकोनॉमी में फ्लो थ्रू होने में। तो मेरे ख्याल से तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गया। शायद इनके दिमाग में जरूर था रुपी डिप्रिसिएशन, वहां पे भी जो तोड़ है कि अगर चाइनीज रेट कट करेंगे और चाइनीज अपना करेंसी को डिप्रिशिएट करेंगे, तो आपको भाग के रुपए को डिप्रिशिएट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। तो उसको लिंक कर देना इंटरेस्ट रेट से, चाहे बैक ऑफ द स्टेज में ही लिंकअप था, ये थोड़ा मायूसी का सबब है अनिल जी। रेट कट करना चाहिए था, क्योंकि आपको टाइम लगेगा। रेट कट जब आप करेंगे, इकोनॉमी पे इंपैक्ट आने में टाइम लगेगा। और ये 6.6 का जो आंकड़ा है, वो भी नहीं मीट होगा जीडीपी का, उसको भी फिर से रिवाइज किया जाएगा फरवरी में, यही हमारी आशंका है। तो ओवरऑल थोड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, बट लग रहा था कि आखिरी पॉलिसी भी है शक्तिकांत दास साहब की, जिस तरह से उनका ओवरऑल स्टेटमेंट था। मतलब आप जो 7वां पॉइंट बोल रहे थे कि फेयरवेल वाली होगी, यानी ये सुन के लगा कि फेयरवेल पॉलिसी है। दो चीजें, रेट कट कर सकते थे, और दूसरा है कि जीडीपी का अनुमान 6.6% है, वो हासिल करना होगा मुश्किल। अतुल जोशी साहब, आपने कहा ही था करना चाहिए, करेंगे नहीं, वही हुआ भी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं किया, लेकिन इस पॉलिसी को देखकर लगता है कि फरवरी में करेंगे? नहीं, वो भी नहीं, वो भी चांसेस फरवरी में भी मगर साहब निराश हो जाएंगे फिर। हाँ जी, उन्होंने देखिए दो चीज जो बहुत साइलेंटली कही है कि प्रूडेंट और कॉशियस अप्रोच कंटिन्यू रहेगा, कि हम रहे ना रहे, लेकिन प्रूडेंट और कॉशियस अप्रोच कंटिन्यू रहेगा। दूसरी चीज उन्होंने कही वो प्रोटेक्शनिज्म की। उन्होंने ये भय जताया है कि अगर दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म आ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ कम हो जाएगी। तो उस हिसाब में बेटर है कि हमारी जो करेंसी है वो जो अगर प्रेशर में आएगी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट घटाना नहीं चाहिए। तो वो वेट करेंगे कि कैसे यूएस की प्रोटेक्शनिज्म खास करके डेवलप होती है, उसका वेट करेंगे। तीसरी चीज, वो बहुत ही लंबा समय, आई थिंक इस जितनी भी पॉलिसीज मैंने सुनी है, उन्होंने इतना समय जीडीपी के ऊपर कभी नहीं दिया। कहीं भी नहीं, एग्जैक्टली। वो शुरुआत भी जीडीपी से की। हाँ, वो जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई हमारा काम है जीडीपी को सपोर्ट करना, नहीं कि उसको बढ़ाना। करेक्ट। तो सपोर्ट के लिए उन्होंने काफी सारी आर्ग्यूमेंट दी, ये दी, वो दी, ये इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री, लेकिन जीडीपी कम होगा, अच्छा खासा कम होगा, लेकिन वो उनके लिए कंसर्न नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा दिया है Q1 25-26 विच इज अप्रैल टू जून 2025, वो उन्होंने Q4 से ज्यादा दिया। करेक्ट। जान मार्च के लिए उन्होंने किया है 4.5 और अप्रैल जून के लिए उन्होंने दिया है 4.6। दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन बढ़ा जा रहा है। तो उनकी अगर प्राइमरी कंसर्न इन्फ्लेशन है तो रेट कट नहीं करेंगे, ऐसा रीड बिटवीन द लाइंस ये है। हाँ, ये है। हाँ, रीड बिटवीन द लाइंस। 75% आप बढ़ा रहे हो तो घटाएंगे कैसे? 75% है कि चांस बिल्कुल नहीं करेंगे, 25% चांस यूएस के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोटेक्शनिज्म आ गया तो रेट लंबे समय तक यहीं पे रहेगा। अजय कंवल साहब के साथ के लिए पॉलिसी ऐसा समझ में आ रहा है कि उन्हीं के लिए लिखी गई है। बिल्कुल सर, आप तो प्रसन्न होंगे। कहाँ तो आप ओएमओ से काम चला रहे थे कि चलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, उससे लिक्विडिटी आ जाए तो भी हम प्रसन्न हो जाएंगे। ये तो 1/4 नहीं, ½ CRR कट दे दिया आपको, 1,16,000 करोड़ रुपए सिस्टम में आ रहे हैं। दूसरा एक और पॉइंट है, उस पर आऊंगा, पहले इस पर अपनी राय दें सर। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्यूट राइट। हमारे लिए तो बहुत पॉजिटिव है, पूरे बैंक सिस्टम के लिए पॉजिटिव है, और मेरे ख्याल से राइट स्टेप है। And I must say, after hearing a few other views, I do feel that high chance of rate cut will come in the first quarter, because it's indicated inflation going down. He's obviously conservative, rightly so, but I think we are probably moving towards that direction now, which is we should expect a rate cut in first quarter.
तो चलिए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी एक बड़ा बदलाव हुआ, उस पर भी मैं आपसे राय लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से राय ले जाए हमारे एक्सपर्ट से। गुरमीत सर, बाजार के लिए पॉलिसी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल? मार्जिनली पॉजिटिव, बैलेंसिंग एक्ट किया अनिल जी जैसा आपने बोला, क्योंकि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जरूरी था, बैंक्स के लिए भी जरूरी है, ओवरनाइट कॉस्ट ऑफ फंड लाने के लिए ज्यादा लेंड कर पाएंगे बैंक। पीएसयू बैंक्स के लिए काफी पॉजिटिव है, उनके सरप्लस बैलेंसेस आरबीआई के साथ ज्यादा है। पीछे कुछ ब्रोकरेज नोट्स भी आए थे कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे हिसाब से 3 से 4 पैसे का निम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो पीएसयू बैंक थोड़े से बल्क डिपॉजिट्स हैं जिन पे निम थोड़ा कम है, जैसे कैनरा बैंक है, मेरे को लगता है एसबीआई पे भी फर्क पड़ेगा, पीएनबी है, वहाँ पे अच्छा फर्क पड़ेगा। रेट सेंसिटिव्स के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है। और एक चीज जो उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि इस बार गांधी जी के साथ उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी कोट किया कि डोंट एस्टिमेट डेस्टिनी, लूज फेथ इन डेस्टिनी ऑफ इंडिया। जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं नेवर बेट एनी। तो आई थिंक स्टांस न्यूट्रल इसलिए भी है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और अभी के लिए वो थोड़े से ना एफएक्स को लेके वरीड है, एफएक्स का जो फॉल हुआ है। तो आप देखिए एफसीएनआर डिपॉजिट का भी लिमिट बढ़ाया है, एफसीएनआर भी जिसे हम बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में वे कर रहा है। और वो बैंक्स के लिए जिनका एनआरआई बेस अच्छा है वो भी पॉजिटिव होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक बैंकिंग सिस्टम को लिक्विडिटी भी देना चाहते हैं, सपोर्ट भी करना चाहते हैं, और थोड़ा सा ग्रोथ के लिए भी कुछ किया है। तो ये पहला स्टेप है, मुझे लगता है और मेजर्स आएंगे। मैं सेटिस्फाइड हूँ, हालांकि मैं मानता हूँ कि रेट कट भी जरूरी था, मैं वहाँ अजय सर से एग्री करता हूँ। बिल्कुल रेट कट जरूरी था, लेकिन हाँ एक चीज़ आपने और बोली कि सुभाष चंद्र बोस साहब का जो कोट है वो सिर्फ और सिर्फ बग्गा साहब की वजह से आया है। बग्गा साहब ने बोल के गवर्नर साहब को बताया भाई कि यू आर टू मच प्रेडिक्टेबल, कुछ और नया, तो अब सुभाष चंद्र बोस साहब का भी आ गया है। चलिए आइए, इस बीच डेट मार्केट पर इस पॉलिसी का असर कैसा दिख रहा है आइए जानते हैं। फिरोज सर हमारे साथ हैं। फिरोज सर बताएं। अनिल सर, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, ये पॉलिसी रेट चेंज या नो चेंज डेट मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। राइट क्योंकि जब लास्ट टाइम चेंज हुई थी, लास्ट फरवरी में 6.5 जब था रेपो रेट, तो 10 ईयर जी-सेक था 7.34। तो अब 10 ईयर जी-सेक स्क्वीज होके 6.8 6.83 पे चल रहा है। तो जो स्प्रेड है वो 27 पैसे ही है। आप देखें जब रेपो रेट 4% था, जब मार्च की आपने बात करी, जो सीआरआर रेट कट आए हुए 4 साल हो गए, तब जब हमने रेपो रेट को इतना नीचे देखा था, तब जाके जो 10 ईयर जी-सेक की स्प्रेड थी 2.8% की स्प्रेड थी। तो जब रेपो रेट ऊपर गया तो नुकसान डेट मार्केट में डेट फंड वालों को या बॉन्ड पोर्टफोलियोज को मार्क टू मार्केट लॉस मिला ही नहीं है। 4% से 6.5, मई 22 से जब रेपो रेट बढ़ाए गए 0.25% से, तो भी आपको कोई भी मार्क टू मार्केट लॉस नहीं मिला। तो ये नैरेटिव जो है कि जब ब्याज दरें नीचे जाएंगी बॉन्ड पोर्टफोलियोज में मार्क टू मार्केट गेन आएगा, कैपिटल गेन आएगा, जब नुकसान नहीं हुआ तो गेन की उम्मीद कैसे? तो मेरा ये मानना है कि डेट मार्केट इज गॉन ऑन द 10 ईयर 5 ईयर बेसिस, इतनी फ्लैट यील्ड कर्व कभी इंडिया में नहीं रही है। ये सबसे बड़ा बैंकिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो डिपॉजिट की टेन्योर्स हैं वो स्क्वीज हो चुके हैं। सो डेट मार्केट्स बैंकिंग के लिए बहुत बैड न्यूज है, क्योंकि फ्लैट यील्ड कर्व की वजह से डिपॉजिटर्स आर नॉट मोटिवेटेड फॉर अ लॉन्गर एसेट टू बी इन्वेस्टेड एंड लायबिलिटी फ्रॉम अ बैंक्स पर्सपेक्टिव। ये इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। और इस बीच में बता दूं, पालिया साहब ने अभी अपनी कॉल भी दी है आईआरसी में खरीदारी करने के लिए आए, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स जब भी जिस तरह से इस डिस्कशन के बीच में कॉल्स आएंगी वो कॉल्स आपके सामने रखते जाएंगे। ये आपके लिए बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और आप आई बैंड में साइड में भी देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा पॉलिसी का विश्लेषण आपके लिए था। सर साथ में ये भी बताइए कि अब कौन कौन से बैंक से जिनको इस पॉलिसी से फायदा होने वाला है? देखिए एक चीज़ क्लियर है नेहा, कि ओवरऑल बैंक्स के लिए पॉलिसी इसलिए अच्छी है कि लिक्विडिटी आ रही है सिस्टम में, और वो लिक्विडिटी वो ऑक्सीजन की तरह है जो सबको चाहिए, दिखती नहीं है, नहीं हो तो 1 मिनट में पता चल जाता है कि हालत खराब है, लेकिन चाहिए हर सेकंड आपको। 2 स्टॉक्स है जिन पे फोकस करना चाहिए इस पॉलिसी के बाद। वैसे तो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए भी अच्छी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ज़्यादा अच्छी पॉलिसी है, लेकिन सीआरआर कट का फायदा कहाँ किसको ज़्यादा मिल सकता है, उसमें जो सबसे पहला बैंक है वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। मैं सिटी की रिपोर्ट भी एक पढ़ रहा था, सिटी की रिपोर्ट ने एकदम साफ साफ कहा कि पीएनबी को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा अगर सीआरआर कट होता है तो। और अगर जाहिर सी बात है कि 0.5% सीआरआर कट किसी की उम्मीद से ज़्यादा था, तो एक स्टॉक ये है जो आपको फोकस में करना है बैंक्स के लिए आज से। दूसरा स्टॉक जो फोकस में करना है वो है साउथ इंडियन बैंक, दक्षिण भारत के बैंक, स्पेशली फेडरल हो गया, साउथ इंडियन हो गया। साउथ इंडियन में इसलिए कह रहा हूँ कि एनआरआई की जो डिपॉजिट रेट है उसमें बढ़ोतरी की उन्होंने परमिशन दी है। पैसा चाहिए, बाहर आने दो एनआरआई से, राइट।
तो एनआरआई की डिपॉजिट सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में आती है। तो केरल बेस्ड बैंक, कर्नाटक थोड़ा फिर भी कम है, लेकिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, तो ये वो बेल्ट है जहाँ पर काफ़ी कुछ पैसा आता है। तो साउथ इंडियन बैंक, पीएनबी, ये दो स्टॉक है बैंकिंग स्पेस में जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और नज़र रखनी चाहिए आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी, इनके लिए भी कुछ बेहतरीन अनाउंसमेंट होते हैं। देखें, एक बार अजय कंवल साहब से जानने की कोशिश करता हूँ। अजय कंवल साहब, जो कहा है गवर्नर साहब ने कि प्री सेंक्शन क्रेडिट लाइन दी जाएगी यूपीआई के जरिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेंड करने के लिए आज से, इसका क्या मतलब है और कितना फायदा स्मॉल फाइनेंस बैंक आप जैसे बैंक्स को होगा इसका? सो अनिल जी, इसमें पॉजिटिव साइड ये है, जैसे हमारे समझो 40 लाख 40-45 लाख कस्टमर्स हैं, जहाँ भी हमें इनको एक लिमिट दे सकते हैं, ये यूपीआई पे होल्ड होगा, जब ये यूज करना चाहें ये कर लेंगे। कस्टमर को बेनिफिट ये है कि वो उसको जब यूज नहीं करना तो इंटरेस्ट नहीं भरेगा। बैंक को आसानी है कि हम लिमिट सैंक्शन करके रख देंगे, वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो समझ लीजिए, एटलीस्ट इन माई माइंड, एक स्मॉल एंटरप्राइज या इंडिविजुअल्स जो जिनकी इनकम लेवल ज़्यादा नहीं है, उनके लिए एक तरह से क्रेडिट कार्ड हो गया कि भाई लिमिट बनी हुई है, जब चाहिए यूज़ कर लीजिए, उसके बाद इंटरेस्ट भरिए। हमारे ऐसे बैंकों के लिए बड़ा अच्छा हो गया। हम आराम से इसको क्रेडिट लाइन को सैंक्शन करके रख देंगे कस्टमर्स के लिए, वो जब यूज़ करे तो उनका लोन स्टार्ट हो जाएगा। सो वेरी पॉजिटिव है। ये है आपके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी पॉलिसी पॉजिटिव बनती दिख रही है। एक बार मैं अब सोच रहा हूँ जल्दी से एक पोल करवा दें। पहला पोल तो यही होना चाहिए, क्या फरवरी की पॉलिसी में रेट कट होगा? आप में से किस किस को लगता है कि फरवरी की पॉलिसी में रेट कट होगा? जरा हाँ में जवाब देने वाले, हाथ खड़े करने वाले। एक अजय कंवल साहब हैं, फिरोज अजीज साहब हैं, गुरमीत चड्ढा साहब हैं, बग्गा साहब हैं, ओके, जय ठक्कर भी हैं, जैन साहब भी हैं, ओके ओके ओके। बाकी कुछ लोग नोटा में हैं, और जो नहीं होने वाला है उसमें अतुल जोशी साहब आप ही है। अच्छा, नहीं होने वाले में भी अगर कोई और एक्सपर्ट है तो बताएं। बाकी अतुल जोशी साहब नहीं होने वाले में 6:1 सर। आप अकेले हैं? हाँ, तो क्या हो गया, तो मूड बना लो वापस, अभी भी हम मौका दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यही खास बात है। तो चलिए, ये एक साफ दिख रहा है कि फरवरी की पॉलिसी में उम्मीदें तो है कि होनी चाहिए। अब होता है या नहीं होता है वो अलग बात। दूसरी चीज, जो 6.6% का जीडीपी का नंबर लिया है पूरे साल के लिए, क्या यह हासिल हो पाएगा? मतलब किसको लगता है कि इससे कम आएगी जीडीपी ग्रोथ? इनमें से इन 6.6% से कम आने? अतुल सर है, बग्गा साहब है, अच्छा, और गुरमीत सर आप भी? नहीं सर, अगर आप डेटा देखेंगे अक्टूबर का मर्केंटाइज डेटा एक्सपोर्ट्स वगैरह, तो अच्छा मुझे लगता है बॉटम आउट हुआ है। जनवरी से गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा, आई थिंक मेंटेन हो जाएगा 6.5 पौने 7 के बीच में रहेगा। ओके, अच्छा, महंगाई का आंकड़ा जो पूरे साल भर के लिए दिया है 4.8% है, जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ, 4.5 से 4.8% किया है। 4.8%, इससे ऊपर महंगाई रहेगी, ये डर किस किस को है? पोल लगे हाथ कर। अच्छा, हाँ, थैंक गॉड, महंगाई को लेकर सब कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट है कि ये कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा, अब एक चीज़ और है जो पॉलिसी में जो फोकस किया, जैसे शुरुआत ग्रोथ से की, महंगाई पर आए, और उसके बाद लिक्विडिटी बढ़ाने की जो बात की। अजय कंवल साहब, क्या लगता है बैंकिंग सिस्टम में जो 1,15,000 करोड़ रुपए आएंगे, धीमी क्रेडिट ग्रोथ से जो जूझ रहा है बैंकिंग सेक्टर, कितने जल्दी आप अपटिक आते हुए देखते हैं इसके? देखिए, आप शेट्टी साहब का इंटरव्यू पढ़िए, वो तो कह रहे हैं कि वो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ 14 to 16%। हमें भी कुछ ज्यादा स्लोनेस नहीं लग रही है, सेक्टर वाइज है। सिंपल एग्जांपल दूंगा, दिवाली में 2 व्हीलर की लाइन लगी हुई है, गाड़ियां नहीं है, और 4 व्हीलर्स में डिस्काउंट चल रहे हैं। सो आई थिंक इज वेरी सेक्टर स्पेसिफिक, पर I don't see any reason why we will not hit the numbers that the governor has said, because इतना स्लोनेस दिख नहीं रहा हमें। अच्छा, एक मिनट, अतुल जोशी साहब भी इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? एक की चीज है इंडस्ट्रियल क्रेडिट, क्या वो बढ़ रही है? तो अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट का डेटा देखूं तो गवर्नमेंट की कैपेक्स काफी कम है कंपेयर टू इवन लास्ट ईयर। इस साल अक्टूबर तक गवर्नमेंट ने लगभग 60,000 करोड़ कम खर्चा किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो गवर्नमेंट पैसा बचा रही है कैपेक्स का, क्योंकि उनको पता है कि फिस्कल में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आ रही है।
तो डेफिनेटली गवर्नमेंट लेड जो एक्सपेंडिचर क्रेडिट ग्रोथ होता है वो नहीं होगा या काफ़ी कम होगा। तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम रहेगी। इंडिविजुअल्स को बढ़ती है तो वो तो अलग बात है, वो तो कंजम्पशन के लिए है, वो कुछ जीडीपी के लिए ठीक है, उसकी साइड इफेक्ट होती है, बट मेन जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट है वो काफ़ी कम रहेगी। ओके, परफेक्ट। अब आइए जल्दी से जान लेते हैं गुरमीत चड्ढा साहब से, इस पॉलिसी के बाद बाजार में कहाँ पैसा लगाना है सर? तो फाइनेंशियल से एक पॉकेट है अनिल जी, जो थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। आप पूरा बैंक निफ्टी देखेंगे 15-16 के मल्टीपल पे है। कुछ अच्छी एनबीएफसी बहुत आउट ऑफ फेवर रही हैं, चाहे बजाज फाइनेंस रहा हो, पूना वाला में थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, लीडरशिप आई है, मॉडल चेंज हो रहा है, तो शायद 1-2 क्वार्टर और आपको ओपेक्स एलिवेटेड दिखेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी मुझे लगता है पॉजिटिव है ओवरऑल लिक्विडिटी ईज होना, और बहुत सारे कंपनीज वहाँ भी, जैसे पीएनबी हाउसिंग है ऑलमोस्ट लेस देन बुक है, 90% सुपर बुक ऑफ रिटेल है, लैप और बिल्डर लोन पोर्टफोलियो बिल्कुल लगभग गायब है। तो ये पॉजिटिव रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये पॉलिसी के साथ मुझे लगता है गवर्नमेंट और फिस्कल सपोर्ट देगी, आपको और अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। एक बार लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी, आपको बहुत सारे पीएलआई और उसके फॉर्म के इंसेंटिव्स देखने को मिलेंगे, जिस हिसाब से अगर ये इफेक्टिव टैरिफ्स बढ़ते हैं जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थ्रो अप करेगा ऑटो में, टेक्सटाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में। अभी सॉफ्ट बैंक के चेयरमैन के जो बेटे हैं वो आए थे, उन्होंने काफ़ी चर्चा करी चिप्स की। आईटी सेक्टर मुझे लगता है जो कि पॉलिसी से कम लिंक्ड है, ओवरऑल बहुत पॉजिटिव टेलविंड्स हैं, हायरिंग बढ़ी है, एट्रिशन बहुत कम हो गया है जी। तो एक जो वेज इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आ रहा था वो कम हुआ है, और वापस से मोमेंटम अच्छा है थोड़ा। आप देखिए अभी न्यूजन को एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, परसिस्टेंट का आउटलुक अच्छा आ रहा है। कुछ तो ओवरऑल आईटी मुझे लगता है विद करेंसी टेलविंड, बेटर डिमांड, थोड़ा सा यूएस में अगर टैक्स कट हुआ तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगा, वो एक पार्ट देखना पड़ेगा। और एक जो स्पेस में बहुत टाइम से बुलिश हूँ वो आपका ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा एनर्जी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ी थीम है। तो ट्रांसफॉर्मर्स में शॉर्टेज है, इंसुलेटर्स, रेक्टिफायर्स, एचपीडीसी स्टेशंस जो बनते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइंस, मैं इस पूरी स्पेस पे बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। तो एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी और फाइनेंशियल्स, ये है पसंद। डेट मार्केट में और इक्विटी में, दोनों में म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाना है तो कौन सी स्कीम्स बेहतर होगी फिर सर? अनिल सर, मेरी राय है कि ब्रॉडर मार्केट की रैली खत्म नहीं हुई है। एफआईआई की अगर मैं देखूं 168 स्टॉक्स में एफआईआई ने 250 स्टॉक जो एनएसई स्मॉल कैप के हैं उसमें बढ़ोतरी की है इस कैलेंडर ईयर में, और 38 स्टॉक ऐसे हैं जहां उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स को डबल कर दिया है। तो ब्रॉडर मार्केट रैली कंटिन्यू करेगी। सो विद दैट लॉजिक मल्टी कैप स्कीम्स रखनी चाहिए आपको अपने पोर्टफोलियो में फ्रॉम अ कैटेगरी स्टैंड पॉइंट। कोटक मल्टी कैप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, वो एक स्पेसिफिक स्कीम, क्योंकि उस मल्टी कैप में एक चौथाई तीनों सेगमेंट में रहता है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल में। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर थीमेटिक है तो कैपिटल मार्केट इंडेक्स को, निफ्टी का जो नया कैपिटल मार्केट इंडेक्स है, दैट्स अ गुड वन। 73% की ग्रोथ आई है Q2 में, विच आई थिंक इज आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का तरीका। आइए, बाजार स्टेबल है, पॉलिसी के बाद 17 पॉइंट ऊपर है, 24,700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत, 53,800 के आसपास डबल सेंचुरी मारने के हम मूड में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में लगातार 11वें दिन हरियाली है, तेजी का माहौल है, बाहर चल रही है। 250 पॉइंट ऊपर हो चुका है मिड कैप इंडेक्स और सेंचुरी मार चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स। चौतरफा खरीदारी का माहौल ब्रॉडर मार्केट में नजर आएगा। विदा लेने का है वक्त। पॉलिसी के खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे पंच, बिल्कुल अतुल जोशी साहब, फिरोज अजीज साहब, अजय बग्गा साहब, गुरमीत चड्ढा साहब और अजय कंवल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रोज के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर साहब, जैन साहब का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, सिर्फ नेहा जी को दीजिए इजाजत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरे साथ हैं नीलेश शाह साहब, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ। हमारे साथ कार्यक्रम में होने जा रहे हैं शामिल पॉलिसी पर और पॉलिसी के बाद बाजार के डायरेक्शन पर और एफआईएस के लौटते रुझान पर, घरेलू निवेशकों के बढ़ते भरोसे पर करेंगे उनसे बातचीत। इस छोटे से ब्रेक के बाद विशेष चर्चा आ रही है, बने रहिए हमारे साथ।